Bismillahirrahmanirrahim. So this video is about operator overloading, and I'll just go over the example that we did in the class of the box addition of the boxes. So let's start by creating a class box, and let's just um, start by creating this class box here. Okay. So this is the class box. These are the public members of this class. So this function here actually calculates the volume of the box, and this set length actually sets the length, set breadth sets the breadth of the box, and set height sets the height of the box. And then in an earlier video I've talked about this pointer. So we'll be using that concept here. Okay. And we'll define the operator overloading bit here. And this is primarily the function that, or the syntax for generating operator overloading function. So here it says that the outcome, this function is primarily an overloading is overloading an operator, which is the plus operator here, which is represented here. So this operator is the keyword, and after that you put the symbol of the operator that you want to overload, and then after this operator symbol, you say that okay, this is primarily to be operated on an object of type box, and the outcome of this particular function is also of type box, and this operator is also applied between two objects of type box. So there are three things that are happening here. One is that the operator is being applied on objects of type box, both of them, and the outcome is also of this particular function when you apply that is also of type box. Okay. So within the body of the program, this is what is happening within the body. So let me just reiterate this. So you apply this operator on two objects that are of type box or belong to the class box in this particular case, and the out the return of this function is also an object of type box. So within the program we define an object box that starts with small b, and this capital B box is representing the class that this object belongs to. And then we say that okay, box dot length. So box dot length, this would refer to the newly created object within the program, small that starts with small b. So uski length ko aap update kar rahe hain by what? This length plus b dot length. What is b dot length? B is the object that acts as an argument to this operator overloading. So argument to the operator overloading function is primarily is an object that comes after the operator symbol. So अगर आप box 1 plus box 2 करते हैं तो box 2 would refer to b, ठीक है, और box 1 would refer to the invoking function in this case. So this length का मतलब ये है कि जो operator से पहले object आ रहा है plus b dot length, b would refer to the object that comes after the operator, ठीक है. So box length में आप दोनों boxes जिनके ऊपर आप operator apply कर रहे हैं उनकी lengths को add कर रहे हैं. This is what this line is actually telling you. This यहाँ पे क्यों आ रहा है? Because we consider के plus से पहले
जो ऑब्जेक्ट आ रहा है दैट वुड बी इन इन्वोकिंग फंक्शन, एज इन द केस ऑफ दिस ऑपरेटर वीडियो अगर आपने देखा तो एक इन्वोकिंग फंक्शन है जो कि दिस जिसको रेफर कर, तो दिस लेंथ, दिस ब्रेथ, दिस हाइट वुड refer to the invoking object. तो इस केस में invoking object कौन सा है? The one that comes before the operator. Simple. और b dot length क्या है? That comes the object that comes after the operator operating जो आपका है ऑपरेटर के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है. So we'll have to define this also, these lengths also. So let's just define this length, width or height. So let's just call them as private members, and we have added those private members here. So that means that they cannot be accessed without a function. So these are the functions through which it actually applies, and this is the operator overloading function that we have actually applied here. And this would end the definition of our class. So here the definition of the class actually ends, and now we write the main program. So first we define our objects box 1, box 2, box 3, और उन objects को हमने यहाँ पे define कर दिया है. These objects have been defined here, and then we are using the set function to set the values for these boxes. So box 1 की लेंथ सेट कर दी, box 2 की लेंथ सेट कर दी, इसी तरह से breadth और height of the two boxes have been set using these statements here. Then we can calculate the volume of these boxes here. I mean, these are just being done just to compare कि volume different आ रहा है या नहीं आ रहा. And then what we'll do is that we'll add the two boxes, box 1 and box 2 together, and you can see here this be box P1 and box 2. Box 1 and box 2, these are the two objects जिसके दरमियान आपने ये ऑपरेटर अप्लाई किया है प्लस का. डेफिनेशन ऑफ प्लस हैज नाउ बीन चेंज्ड. अब इनके रिस्पेक्टिव लेंथ्स ऐड हो जाएंगी. तो दिस डॉट लेंथ जो कि ऊपर हमने प्रोग्राम फंक्शन के अंदर लिखा था, this arrow length would refer to the invoking object in this case, and invoking object in this case is whatever comes before the operator. So box 1 की लेंथ को रेफर अगर आपने करना है तो this arrow length के साथ करेंगे, और box 2 की जो लेंथ होगी that would be referred as b dot length, क्योंकि argument would be considered in this particular case, the argument would be considered whatever comes after the operator. ठीक है, तो इस केस में box 2 को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा वहाँ पे, जैसे b डॉट लेंथ आपने लिखा, और बॉक्स 1 के लिए आप क्वालिफाई अगर ना भी करें या आप दिस पॉइंटर यूज करें तो उससे भी ये मामला जो है वो हल हो सकता है. एंड देन यू कैन फाइनली कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 3 एंड प्रिंट दैट वॉल्यूम. सो दिस इज व्हाट दिस वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 3, एंड यू कैन एक्चुअली print this. Okay, so this is how this would be done. So let's just compile this and see कि ये आउटपुट पे क्या दे रहा है. Okay, so you can see कि तीनों बॉक्सेस के वॉल्यूम्स जो है ना वो आपके पास आ गए. ओके, एक इसमें छोटी सी चेंज हम अगर करते हैं तो दिस पॉइंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दिस एरो लेंथ जो है, एज आई टोल्ड यू, कि वो ऑपरेटर से पहले जो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट है उसको वो रेफर कर रहा है. लेट्स जस्ट से कि मैं अगर दिस पॉइंटर यूज नहीं करता, इफ आई सिंपली राइट लेंथ हियर, तो फिर क्या होगा? इफ यू रिमेंबर द वीडियो जो कि मैंने दिस पॉइंटर के लिए यूज की थी, अगर मैं सिंपल लेंथ, ब्रेथ और हाइट रिप्रेजेंट करता हूँ, एंड नाउ लेट्स जस्ट सी कि अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो क्या होगा.
you can see that there isn't any change at all in this particular case. So that means कि जो invoking function होता है function के अंदर आप अगर आप without qualifying कि ये किस object की length आप refer कर रहे हैं तो length breadth height alone या this arrow length this arrow breadth this arrow height would always refer to the invoking object. तो invoking object इस case में हमारे पास box 1 है. So this is the invoking object in this particular case. So हुआ क्या है इस केस के अंदर हमने प्लस की डेफिनेशन जो है वो उसको चेंज किया है. नाउ इट्स नॉट a normal plus that is actually happening in this particular case. अच्छा अगर मैं सिंपली प्लस को करता हूँ फॉर एग्जांपल इंटीजर a मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ और b डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं a की वैल्यू को 10 सेट कर देता हूँ और b की वैल्यू को भी लेट्स से 20 सेट कर देता हूँ और फिर मैं ये कहता हूँ कि c इज इक्वल टू a प्लस b और right and let me just see out this and see कि simple प्लस ऑपरेटर जो है वो इस सूरत में काम करता है या नहीं करता. लेट मी जस्ट कंपाइल दिस एंड हियर यू गो. यू कैन सी के यहाँ पे ए एंड बी के अंदर के दरमियान भी मैंने प्लस ऑपरेटर यूज किए लेकिन ये प्लस ऑपरेटर वो नॉर्मल प्लस ऑपरेटर है जो कि नॉर्मली यूज होता है. यहाँ पे ओवरलोडेड क्यों नहीं यूज हो रहा क्योंकि ओवरलोडेड की जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बताई है ओवरलोडेड की जो डेफिनेशन बताई है वो हमेशा बॉक्स टाइप ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जब आप इस प्लस को ऑपरेट करेंगे तो उस सूरत में ये ऑपरेट होगा. अदरवाइज इट विल नॉट बी ऑपरेटेड इन दिस वे. अदरवाइज जो सिंपल आपका जो प्लस ऑपरेशन है दैट विल बी डन. I hope this simple and small video would help you understand the operator overloading. Operator overloading में आप बहुत सारी different चीज़ें कर सकते हैं and you will come to know of those in your labs and in your probably in your assignments. I hope this was helpful. Thank you very much.